Hello everyone, I'm Shilpa and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that every time I upload any video, you will get notified. So finally, I'm doing the most awaited video of my channel, which is how I edit my Instagram pictures part 1. Part 1 in the sense, I'm gonna share my one preset for now because I don't know उसका result कैसा होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. सो इन दैट केस अगर आपको अच्छी लगेगी तो आई विल शेयर माई अदर प्रीसेट्स टू. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये प्रीसेट्स शेयर करना मेरे लिए बिल्कुल ईजी नहीं था बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक वेबसाइट बना करके वहाँ पे अपने प्रीसेट्स सेल करूँगी सो दैट आई कैन अर्न समथिंग. बट आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए थे, इतने मैसेजेस किए थे, सो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर ही देते हैं एंड लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा जाता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता. और हाँ, अगर आप मेरे प्रीसेट्स यूज़ करेंगे सो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन दैट पिक्चर. आई विल शेयर देम ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी. So without further ado, let's start the video. So now I'm going to open the Lightroom app and मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दूँगी so that आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ. So now I'm going to open the Lightroom app. हम all photos में जाएंगे and I'm gonna select this picture and gonna start editing. First light में जाएंगे and then exposure. Exposure will be on -0.39. Contrast -16, highlights -100, shadow +31, whites -47, blacks +35, now we will move on to color. Temperature +25, tint +3, vibrance -16, saturation -12, now we will move on to mix. Hue will be on -23, saturation +64, luminance -13, Hue will be on -12 in orange, saturation will be on 0, luminance +30, yellow 0, -100, +1, in green +35, saturation -69, luminance -30, blue, Hue will be on -32, saturation +54, luminance -39, dark blue -15, +62, -33, saturation +9,
Now we will move on to effects. Texture plus 15, clarity minus 16, dehaze plus 20, in detail, sharpening 52, noise reduction 19, color noise reduction 9, now we will move on to split toning. We will be on 219, and saturation on 25. In shadows, Hue will be on 36, saturation on 10. Done. Now we will move on to curve. सो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी कर्व्स की, तो उसे देखकर आप सेटिंग सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाएगी तो एडिटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। सो जस्ट मेक श्योर कि वो सही हो। Now we will move on to profile and select modern 9, and now it's done. So now I'm going to copy the settings and paste it on other pictures. Copy and paste, and woo, changed. Next picture, and it's changed. Next picture, I hope you guys like this editing, because right now I'm literally loving it. And guys, make sure जब आप curves की editing कर रहे हो, like curves should be exact, otherwise वो पूरी editing change कर देगा। तो कोशिश करना कि curves same ही रहें, कुछ different ना हो पाए। So that's it for the today's video. I hope you guys enjoy watching it and gonna try them. And if you're gonna try them, don't forget to tag me, and I will share them on my Instagram story. And comment down below that you guys want more preset or editing video on my channel. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel, and turn on the notification bell, and follow me on Instagram, and I will see you in my next video. Till then, stay healthy, stay at home, and bye bye.